So today I will talk about saddle point. Saddle point, this is a game. Player A has two strategies, 1 and 2. Player B has two options, 1 and 2. Now, player A plays maximin. He will select min from the first row, that is 1, and min from the second row, that is -1. And out of these two min, we will select the maximum value, which is 1. So here we will see this. Row minimum is 1 and second row का minimum है -1 और इनमें से maximum क्या है 1. Similarly, player B will play max, min, max. So we will select the maximum out of both the columns. फर्स्ट कॉलम का मैक्सिमम 1 है और सेकंड कॉलम का मैक्सिमम 6 है और इनमें से मिनिमम 1 है. Therefore, max min is equal to min max. 1 is the saddle point. किसी गेम में सैडल पॉइंट एग्जिस्ट होता है तब कहते हैं जब मैक्स मिन इज इक्वल टू मिन मैक्स हो. If max min is equal to min max, then the game has a saddle point. So this game has a saddle point, and the player A will select first option, yeah, action 1, and player B will also select action 1, and the game has a value of 1. So this is the solution of game. Player A will play A1, player B will play B1, and value of game is 1. This is the solution of this game. Now let's take another example. Here both the players have 3 actions possible, A1, A2, A3, and B1, B2, and B3. First, we will select minimum from each row. So from the first row, the minimum value is -4. From the second row, the minimum value is 1. And from the third row, its minimum value is -3. From all the row minimum, we will select the maximum one, which is 1. All these other two values are negative values. So we will select 1. Now from the columns, we will select the maximum value. First column की maximum value 1 है, second column की maximum value 5 है, और third column की maximum value 4 है. इन तीनों में से minimum value है 1. Therefore, 1 is our saddle point. A2, player A will play A2 and player B will play B1, and the value of the game is 1. So this is the solution of this game. Player A will play A2, player B will play B1, and the value of the game is 1. This is the solution of this game. Now let's move to another example. This is we have to see whether this game has a saddle point or not. So this is the minimum value in this row is 0, and in this row is also 0. Out of these two, we can select anyone. Maximum value in this column is 7, maximum value in this column is 8, and out of these two maximum, the minimum value is 7. So this game does not have a saddle point because max min is not equal to min max. So whenever a game has no saddle point, then we apply the principle of dominance. So if there is no saddle point, then we apply the principle of dominance. According to the rule of dominance, we compare one row with the other row. If all the elements of one row are
less than or equal to the, if all the elements of a row are less than or equal to corresponding elements of other row, then that smaller row will be deleted from the matrix. अगर कोई एक रो को हम दूसरी रो से कंपेयर करते हैं और पहली रो के सारे एलिमेंट्स दूसरी रो से कम हैं, तो हम जो रो छोटी है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इसी तरह से कॉलम्स का भी डोमिनेंस रूल है। कॉलम डोमिनेंस में हम एक कॉलम को दूसरे कॉलम से कंपेयर करते हैं और जो कॉलम जिसके सारे एलिमेंट्स दूसरे कॉलम से बड़े हैं या बराबर हैं, उस कॉलम को हम डिलीट कर देते हैं। कॉलम्स में जो कॉलम बड़ा होता है वो डिलीट होता है, रो में जो रो छोटी होती है वो मैट्रिक्स से डिलीट हो जाती है। इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप। डोमिनेंस मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो फर्स्ट रो को सेकंड रो से कंपेयर करिए। A1 को A2 से कंपेयर किया, 3 इज लेस देन 5, 5 इज लेस देन 6, बट 4 इज नॉट लेस देन 2, तो ये कंपैरिजन फेल हो गया। फिर फर्स्ट को हमने थर्ड से कंपेयर किया, तो 2 इज लेस देन 3, 1 is less than 5, 4 is equal to 4, and 0 is less than 2. Therefore, we can say that the A3 row can be eliminated from the matrix as this method, as this row is dominated by A1. A3 row is dominated by A1. सबसे पहले हमने इसमें A3 और A4 को कंपेयर किया है, तो 2 is less than 3, 1 is less than 3, 4 is less than 5 and 0 is less than 2। तो A3 रो को हम एलिमिनेट कर सकते हैं A4 के कंपैरिजन में। तो ये हमारी A3 रो एलिमिनेट हो गई। यहाँ पर A1 है, A2 है और A4 है, A3 को हमने एलिमिनेट कर दिया। नाउ वी सी, यहाँ पर हम नेक्स्ट हमने कॉलम 2 को कॉलम 4 से कंपेयर किया, कॉलम 2 और कॉलम 4। तो कॉलम 2 में हमारे हैं 5, 6, 3 और कॉलम 4 में 2, 4, 2। तो 5 इज बिगर देन 2, 6 इज लार्जर देन 4, 3 इज लार्जर देन 2। देयरफॉर कॉलम 2 कैन बी एलिमिनेटेड। जो कॉलम बड़ा है वो एलिमिनेट हो सकता है। तो ये हमारा कॉलम 2 एलिमिनेट हो गया। अब रिमेनिंग में से हम कंपेयर करते हैं। फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि 4 is bigger than 3 but 5 is bigger than 2। फर्स्ट कॉलम और फोर्थ कॉलम को कंपेयर करें, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को कंपेयर करें, B1 और B4 को। 3 is higher than 2, 5 is higher than 4, 3 is higher than 2। Therefore, the column 1 can be eliminated। अब रोज का कंपैरिजन फिर से कर सकते हैं हम। इसके बाद हमने देखा कि वी कंपेयर फर्स्ट रो एंड फोर्थ रो। 4 is less than 5 and 2 and 2 are equal, therefore A1 can be eliminated from the matrix। So this is the game we have obtained. Through the dominance rule, we have reduced the size of the game to 2 by 2. And to solve 2 by 2 game, we use analytical method that I will be covering in the next class। Dominance rule के apart from the row and column rule, there is one more rule of dominance where
which is known as average rule of dominance. अगर कोई रो बाकी रोज के एवरेज से छोटी है तो वो छोटी रो को हम एलिमिनेट कर सकते हैं. अगर कोई कॉलम बाकी अदर कॉलम्स के एवरेज से बड़ा है तो बड़े कॉलम को एलिमिनेट किया जा सकता है. केवल हम रो को रो से कंपेयर करें या कॉलम को कॉलम से कंपेयर करें जरूरी नहीं है. वी कैन कंपेयर अ रो विद द एवरेज ऑफ अदर रोज and we can compare a column with the average of other columns. And if the row is less than the average of other rows, the row can be eliminated. And if a column is greater than the average of other columns, then that column can be eliminated. So this is the principle of dominance.